right? In 2D structures, what are the two things that we look for? We look for perimeters, we look for area. Yep. जी सर, Okay. ठीक है, Now we're moving on to 3D structures. ठीक है सर, Okay. अब 3D structures के अंदर क्या होगा? We've got 3D, right? So 3D means three dimensions, right? Okay. ओके सर, Three dimensions, right? अब हम थ्री डायमेंशन की जब बात करते हैं, सो वी हैव ए वाई एक्सिस, वी हैव एन एक्स एक्सिस, और जब हम थ्री डी में बात करते हैं तो देर इज समथिंग कॉल्ड डेप्थ which is the z axis, right? So if we look at this, you've got something on the z axis, which is your width. Okay. We've got the y axis, which is your height. And then we have the x axis, which is your length. Okay. ओके सर, So what we're looking at right now is a cuboid. And when we're talking about surface areas, right? So what is a surface area? A surface area is the total sum of all of the faces of an object, right? So if you have a cuboid, you have one face, you have second face, third face, fourth face, fifth face, and you have this face, right? Which is your sixth face. So there's a thing called a net diagram, right? So what is a net diagram? A net diagram is what shows you the faces of a 3D object are shown by a net diagram. Okay. So what happens is you open this. For example, here is a cylinder and you've opened this. So this is a net diagram of a cylinder. So if you were to make a cuboid as a net diagram, you would have sir, do you mean the pieces which merge together to form the 3D shape? yeah. Say, so they will fold together in order to form the 3D shape. Basically, if these were cutouts of a paper and you folded them back together, they would form a 3D shape. Okay. ओके सर,
So this is your net diagram, right? अब जब हम surface area निकालेंगे, so we've got this length and this length. So we'll call this A, we'll call this B. Then we've got B and we've got C, right? And then we've got D, right? So this much is D, this much is A, this much is C, and this much is B, right? So when you do B times A, you get the area of this part of the net, right? This part of the net is C times D. This part of the net is C times B. This part of the net is again A times B, right? Mhm. And this part of the net is C times B, and this part of the net is C times D. Okay, make sense? Sir, sir, can you explain the concept? Like, We do surface area, no? Okay. on So the surface surface area. area is the sum of the area of the individual surface, right? We got one, two, three, four, five, six surfaces in Cuboid. ओके सर ठीक है. Right? और इनके डायमेंशन जो है हमने ए रखा है, बी रखा है, सी रखा है, डी रखा है. Okay? So this is how we find the surface area. And we have 2AB plus 2AC plus 2CD plus 2CD. We give you the surface area of this cuboid. Similarly, when we have a cylinder in the car, you got a circle on the front side and a circle on the bottom side, right? We got to ओके. okay. So इनका नंबर डायरेक्टली निकल जाएगा सूत्र आने से चार स्क्वायर right? Right? सर तो ये 2 पाई r² होगा. Yeah. So basically we got 2 pi r square. ये आपका एक पार्ट होगा and then you have this. Yeah. When you take an exam, say, for example, you get the exam. Okay. So you've got a Pepsi can and you cut it in the middle, यहाँ से. And then you lift this portion up and you cut this portion up as well. So you separate the top. Say, so you cut this portion off. So you make this entire circle separate, right? Just leaving this much intact and from the bottom as well, right? So you cut this much till here. So again, now you're left with यहाँ तक. And then you cut from the center, right? So what you'll have when you unravel this into a net diagram is a rectangle. Okay. And you have a circle and another circle. Okay. Now, when we take this circle and we take its circumference, would that equal the length of this rectangle? Yes or no? Sir, can you repeat? This circumference is 2 pi r. Okay. Right. So when we unravel this length, it is also 2 pi r. No, sir. I don't think so.
So if we cut the circle and that equals the length, do you mean that? No. आई एम सेइंग कि हमारे पास ये कैन है. ओके. Visualize this for a second. Let me turn my camera on. Okay. Can you see the video? Yes, sir. So, if I have a sheet of paper, let me get the sheet. Okay. So, I have this sheet of paper. Does it resemble a cylinder at this point? Yes, sir. Okay. Now, considering that the edges of this paper do not overlap, right? So they're Okay. not overlapping, right? So what would the circumference of this circle be? Just this circle, the circumference. So 2 pi r. 2 pi r, right? Now, when I open this as a sheet of paper, what is this length now? It is equal to 2 pi r. 2 pi r से equal होगी, right? So that is the basic concept कि जो rectangle बनेगा उसकी जो length होगी it will equal to 2 pi r. Okay, okay, okay. Now I understand. Right? Now look back at this image, right? So this is that sheet of paper again. यहाँ आपका center है, right? And you basically cut through it, okay? From here till here, right? Okay. Now since you've cut it and then you've opened it, so this length will now look like this, right? Yes, sir. Okay? So now it's equal to 2 pi r. And then जो इसकी normal length थी यहाँ से यहाँ तक, that is its height. Okay? So the height remains the same. So 2 pi r multiplied by h will give you the area of this rectangle. So the surface area of a cylinder is equal to 2 pi r square plus 2 pi r h. Make sense? Yes, sir. ठीक है. ठीक The होगा? 2 pi r square is the area of circle and the 2 pi r h is the area of rectangle. Yep. Okay. So we've got 2 pi r square and 2 pi r h. So yeah. Now what they've done is something clever. They've made these basically they took this and they took 2 pi r as common. Okay. So what that looks like is 2 pi r bracket r plus h. So you can remember either of these formulas. It doesn't matter how you you know solve the question. दोनों से आंसर एक ही आएगा.
However, I would say remembering this is easier because one part is you remember how the net diagram is built, right? And it's broken down into its components. So I would say I think it's better that you remember this, Okay, sir. and from this you can obviously derive this from here. Okay, sir. ठीक Okay, है. so let's solve some questions. So this is a cuboid. I want you to do A, B, and C. Actually, just do A and B. Okay, sir. ठीक है. Sir, done. How much? Sir, for A, 600 centimeters square, and for B, 192. So अगर हमारे पास वैल्यूज हैं 12, 6, नहीं 10 and 5, right? So you'll have one face which is 5 times 10, one face which is 10 times 12, and one face which is 5 times 12, right? So क्या आंसर आया? Sir, 600. 600 कहता है. Sir, length into width into height. तो वॉल्यूम हो जाएगा ना, सरफेस एरिया क्या है. सरफेस एरिया चाहिए ना. सो सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनका एरिया निकालेंगे, Oh, okay. Sorry. right? And then since you have three sides and you have total of six sides, so you multiply that by 2. इनका जो सम आएगा. सर, तो इसका मतलब 12 इंटू 10 करना है, उसके बाद 10 इंटू 12, 10 इंटू 5 करना है, ठीक है, और फिर 12 इंटू 5 करना है. सही है. ठीक है. तो उनको ऐड कर देना. सही, इनको ऐड करो फिर बताओ क्या आ रहा सर, 230.
है। अब इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि यू हैव 6 फेसेस, राइट? 460। राइट, सो यू गॉट 460। ये आपके पास एरिया आ गया, सरफेस एरिया। अब हमारे यस पास वैल्यूज चेंज हो गई। वी हैव 4, 6 एंड 8। सर 208 ओवरऑल जो राइट, आंसर है। गुड। फाइनल आंसर इज 208। ठीक हो गया। नाउ ये पूछ रहे हैं कि हाइट बताओ और सरफेस एरिया दीजिए, राइट? So what we'll do is, again, we'll make the same thing. However, हम height की जगह h लिख देंगे। Incoming voice call from Thai Now Ami. with h, we got 6 and we got Incoming 5. voice call from Thai Ami. Incoming voice call from And the Thai surface Ami. area is 104. Incoming voice Okay? call from The Thai first thing Ami. that you'll do is 104 is equal to 2 bracket, बताओ क्या क्या होगा? सर एल डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एच प्लस एल एच। नहीं ना, W नहीं लो, इनके तो वैल्यूज दिए है ना, खाली H को तो H लेंगे हम, इनके वैल्यूज दिए हैं तो। ओके तो सर 5 into 6 ये 5 into 6 प्लस 6 into h या 5 into h प्लस 6 into h। ठीक Incoming voice call from Mumu. है। अब सबसे पहली चीज क्या करोगे? Incoming सर voice एच वाली call from वैल्यूज को ऐड Mumu. कर देंगे। ठीक है, 11H आ गया। Incoming voice call from Mumu. 30 Incoming voice सही है। call from Mumu. अब क्या करोगे? सर अब जो है Incoming voice call from 30 Mumu. और 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, Incoming voice call from Mumu. 60 आ गया और ये 22। ठीक हो गया। Incoming voice call from Mumu. 60 को दूसरी साइड ले जाएंगे, माइनस हो ठीक जाएगा। है, Incoming सही है, voice call from Mumu. In और 22 44 से डिवाइड हो जाएगा ठीक है, तो 2 आ जाएगा। सही। ओके, गुड। अनदर थिंग दैट यू कुड हैव डन इज कि आप इसको 30 और 11 ही रहने देते और यहाँ पर 2 पहले डिवाइड कर देते, तो आपके पास यहाँ 52 आता। फिर आप 30 से माइनस करते तो आपके पास 22 आता। डिवाइड बाय 11 गिव्स यू h which is 2। ठीक है, वो तो ऑप्शन है, फाइन। अगला वाला क्या कह रहा है? अगला वाला कह रहा है L is 2 incoming voice call from Mumu. और width is 8। अच्छा, did you Incoming see that voice I made call a from cuboid Mumu. यहाँ पे? मैंने made Incoming voice call from Mumu. making the calculation much easier, Incoming voice call from Mumu. right? Incoming voice सर call आपकी from Mumu. आवाज़ जो है वो थोड़ी भारी सी आ रही है। Incoming voice call from Mumu. अब तो Incoming अभी voice same call from Mumu. Incoming voice call from Mumu. Incoming अब तो जी सर अब बेहतर है। अच्छा, so did you see that I made this cuboid mixing के लिए? यस सर सही है। मतलब 2 और 8। हाँ, so I drew the cuboid पहले से ना, ताकि मुझे इशू ना हो लेंथ वगैरह देखने के अंदर अच्छा कौन सी वाली किससे मल्टीप्लाई होगी, राइट? यस सर। So this is something that if you're doing on your own, you should do that as well. ओके तो सही है। अब इसका बताओ क्या करोगे? शायद इसको मैं नोट ऑन। सर इसका पहले 112 डिवाइड बाई 2 करेंगे ठीक हो गया, तो जो ब्रैकेट में जो भी वो है 2 into 8 करके 16 आ जाएगा और
10H प्लस 10H आ जाएगा। ठीक है, which gives you, 112 डिवाइड बाई 2 56। ठीक है, और 56 माइनस 16 ठीक है, इक्वल टू 10H। ठीक है, और 40 आएगा, 40 ये इक्वल टू 10 है, 46 आ जाएगा। 40 आएगा। ओ हाँ सॉरी सही, 40 हाँ 40 आएगा, डिवाइड बाई 10। सही। तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 आ गया, राइट। तो नाउ यू नो सरफेस एरिया। अब सिलेंडर की देखते हैं, राइट। अब सिलेंडर के अंदर व्हाट वाज द फॉर्मूला, डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला? यस सर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एक्स। यप, ओके, विद दैट सॉल्व ए एंड बी। ओके सर। सर आप इस वाली बुक का मुझे पीडीएफ भेज सकते हैं, क्लास के बाद आई सेंड भेजेंगे। दिस, श्योर, वेरी गुड। सर डन। बताओ पहला वाला क्या? सर 100.5 सेंटीमीटर सही है, स्क्वायर उसके बाद और 276.5। सही, गुड, ठीक हो गया। सही है। नाउ वी आर आस्किंग फॉर दी हाइट अप टू 1 डेसिमल प्लेस फॉर सरफेस एरिया दी हुई है। चलो इसका ए और बी ट्राई करो। ओके सर।
सर डन। बता। सर पहले वाले का 1.9 है। 1.9 है, कैसे किया? फिर 40 इक्वल्स टू 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h, क्या यार? 2 पाई इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 पाई प्लस 4 पाई इंटू h। तो क्या किया, 240 को आपने पहले माइनस कर दिया 2 पाई स्क्वायर से। नहीं सर अभी नहीं किया। अच्छा। सर 8 पाई प्लस 4 पाई 12 पाई हो जाएगा। 40 डिवाइड बाई 12 पाई। एक सेकंड। मेरे पास 1.2 आ रहा है। तो आपके पास आएगा 40 इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h, ऐसे ही है। सर दोबारा बोले। 40 इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। जी सर। ठीक है, तो आपने 2 पाई r स्क्वायर पहले माइनस कर दिया, ठीक है, और आपने 2 पाई r जो बचा उसको आपने इससे डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू h, ऐसे ही है। नहीं सर मैंने जो पाई वाली वैल्यूज हैं उनको मतलब रेडियस के साथ मल्टीप्लाई किया और उनको ऐड कर दिया, उसके बाद डिवाइड किया मैंने। सही है, तो फिर क्या वैल्यू आई आपके पास? फिर 1.06। 1.06, मेरे पास 1.2 आ रही है। अच्छा, मैं बता दूं इसका। जब आप 2 पाई r स्क्वायर निकालते हैं तो कितना आ रहा है? फिर 2 पाई r स्क्वायर 8 पाई r है, तो सही है, तो फिर उसकी वैल्यू ऐसे क्या बनती है? 25.1। ठीक हो गया। और 2 पाई r की क्या बननी है? 4 पाई। ठीक हो गया, उसकी 12.5 या ट्वेल्व जी पॉइंट सिक्स बननी है, राइट? जी सर। तो 40 माइनस 25.1 डिवाइड बाय 12.6, ऐसा ही है। जी सर। 1.2 आ रहा जी सर 1.18। है, सही है, 1.18। ठीक है, उसके बाद वाला। फिर उसके बाद वाला 0.8 आ रहा है। 0.8 आ रहा है। 0.5 आ रहा है मेरे पास। चेक करो दोबारा। ओके सर। ओके सर करता हूँ।
0.85 आ रहा है। सॉरी, 0.85 आ रहा है। मेरे पास 0.5 आ रहा, चेक करो क्या। देखो सही डाला है नहीं डाली वैल्यूज। फिर रेडियस 3.5 था और सरफेस एरिया 88 था। ठीक है, तो तो 88 88 के अंदर आपने ऐड करना। फिर इस बार 88 में से मतलब टू पाई आर स्क्वायर जो है वो 76.9 आया, और जो 2 पाई आर है वो 21.9 आया। 9 76.77 ही है तकरीबन। और दूसरा क्या है? 21.9। वो भी 22 ही है तकरीबन, तो 88 माइनस 77 डिवाइडेड बाय 22, 0.5 आ रहा है। जी सर, अब जी सर 0.5 आ रहा है। अभी ठीक है, मतलब दोबारा रिकैलकुलेट किया। सही है। मैं 76 मेरा से ख्याल है आज यहीं तक डिवाइड रखते हैं। कर रहा था, तो शायद इसलिए गलत आया। सर, मेरा ख्याल है आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके सर, ठीक है। ओके, ओके सर, अल्लाह हाफिज़।